हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ऊबर में पूछा गया एक प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। So in this particular product based question we have a table called Uber Signals, and in this particular Uber Signals we have a column called device ID and location ID. Based on this particular column device ID and location ID, we are going to find this particular output where we have to find that एक particular device कितने total number of location पे travel किया. So for if you could see for device ID 15, it is traveled in two different locations, that is Pune and Mahabaleshwar. Similarly, which of the location has a maximum signal? Let's suppose if someone is traveling from Pune to Mahabaleshwar and most of the signal is coming from Pune and the rest of the signals are coming from Mahabaleshwar, here we have to find कि maximum number of signals कौन से location से आया है, कौन से location से आया है. So for device ID, the maximum number of signals are coming from Pune. Similarly, we also need to find that what are the total number of locations we have. Okay, to get this particular output, I have break down this problem into three different steps. First, what we are going to do, first we are going to find that एक particular device के लिए एक particular location पे कितना signal count है. So let's suppose for Bangalore we have 7 count, for device ID 15 पुणे के लिए 5 count है और वही 15 device ID महाबलेश्वर के लिए 3 count. Similarly, in the next step, what we will do, we are going to add another column, okay? And ये another column we are going to use a Windows function called first value, and उस first value के function से we are going to find that ऐसा कौन सा location है जिसमें we have the maximum number of signals. Similarly, when we get that, we will be grouping these data and we are going to find that एक particular device के लिए total number of location क्या traveled हुआ, maximum signal कौन से location से आया. So we have Bangalore, and similarly total number of signal what we have received. Okay, so we are going to find these particular data. Okay, let's quickly move to SSMS and let's start. So to get this particular output, let's quickly move to SSMS and let's check how we are going to achieve that particular expected output. So इस particular query के लिए I have created a table called Uber Signal. Okay, so let's see what data we have in this particular Uber Signal. So let's start from Uber Signals, and if I execute it, here I have the data for two different device ID 15 and 16, और वो particular device ID कौन कौन से location में travel किया है, we have the data for that. Now our first step is to achieve this particular data where we are फाइंडिंग द डिवाइस आईडी, उस डिवाइस आईडी और उस एक पर्टिकुलर डिवाइस आईडी पर्टिकुलर लोकेशन से कितना नंबर ऑफ सिग्नल आया, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज एग्रीगेट फंक्शन कॉल्ड काउंट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर कॉलम कॉल्ड डिवाइस आईडी कॉमा लोकेशन कॉमा काउंट, एंड आई एम गोइंग टू ग्रुप इट बाय डिवाइस आईडी एंड लोकेशन. सो इफ आई execute it, here you could see that I am getting this particular output और मेरा पहला डेटा निकल गया. where what we are finding, first we are finding कि एक particular device के लिए एक particular location से कितने number of signals आए. okay, so we got that. okay, so what I'm going to do, I'm going to keep it into a CT table. so CT table का starting होता है इससे CT with CT as, and in parenthesis I'm going to keep that. Now at the same time I am going to create a recursive parenthesis, और मुझे अब I want to get this particular data where I am going to add another column. वो column मुझे ये बताएगा कि कौन से ऐसे location है जिससे maximum number of signals आया है. okay, and similarly for this only we have a Windows function called first value. so वो क्या करेगा, अगर let's suppose I have two locations Pune and Mahabaleshwar, और पुणे से ज्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स आए हैं, महाबलेश्वर से लेस नंबर ऑफ सिग्नल्स आए हैं, द फर्स्ट वैल्यू विल गेट द डेटा फ्रॉम विल टेक द पुणे एज आवर result set. okay, so I'm going to create another recursive table, that is ct2 as and parenthesis on and parenthesis close. okay, and I'm going to select these columns where select device ID comma location comma signal count, and now what I'm going to do, I'm going to use a Windows function called first value. और ये first value में what column I'm going to use, I'm going to use a column called location. एंड जैसे ही अपन ओवर क्लॉज यूज करते हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन एज अ विंडोज फंक्शन ओवर एंड पार्टीशन बाय. सो यहाँ पे मुझे पार्टीशन करना है बेस्ड ऑन डिवाइस आईडी, बिकॉज डिवाइस आईडी 15 का डेटा कभी भी 16 के डेटा से सेम नहीं होगा. ओके,
So I'm going to partition it by device ID and order by signal count. तो जैसे ही हम लोग इसको ऑर्डर सिग्नल काउंट से ऑर्डर करेंगे एंड ये अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक द फर्स्ट वैल्यू. सो फॉर डिवाइस ID 16 वी हैव टू लोकेशन, बैंगलोर एंड पुणे, एंड बैंगलोर का सिग्नल काउंट ज्यादा है, तो इट विल टेक द फर्स्ट वैल्यू बैंगलोर एंड give it in the result center from CT. So I have to give it as max signal location. Now if I select it, like select star from CTE2, here you could see that I am getting the expected output. और यही expected output हम लोग find करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग max signal location निकालने वाले थे. Now we have to find और we have to achieve this third step. अब third step में अगर ध्यान दोगे तो डिवाइस ID 15 और 16. सो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ लोकेशन फाइंड करना है, तो वो क्या कर सकते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन अपन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग काउंट. अगर मैं लोकेशन का काउंट लगा दूं तो मुझे यहाँ पे 2 मिल जाएगा. सिमिलरली मैं मैक्स सिग्नल लोकेशन को यहाँ पे अगर ले लूँ, इससे ग्रुप कर दूं, तो वी विल गेट दैट. एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स मुझे चाहिए होगा, तो मैं सम कर लूंगा फॉर सिग्नल काउंट. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर CT टेबल 2 एंड first what I want the device ID. So I want the device ID and after that what I want the total number of locations. So यहाँ पे मुझे location है और location का count चाहिए ना basically. So what I'm going to do, I'm going to just count this location and I'm just naming it as total number of locations. Okay, similarly what I'm going to find, I'm going to find the max signal location. So max signal location को मैं वैसे ही डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ. ओके, क्योंकि मुझे वो ग्रुप बाय क्लॉज में ऐड करना पड़ेगा. सो मैक्स सिग्नल लोकेशन एंड द नेक्स्ट थिंग, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर सिग्नल काउंट. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि लेट्स सपोज फॉर लोकेशन 15 वी हैव 5 सिग्नल काउंट फॉर पुणे एंड 3 सिग्नल काउंट फॉर महाबलेश्वर. तो मैं ये दोनों को जोड़ के सिग्नल काउंट 8 लाना चाहता हूँ. ओके, सो वी हैव टू डू सम. ओके, वी हैव टू डू sum. So what I will do, I will use another aggregate function called sum and I will put the column signal count from the CTE2 table, and if I execute it as total number of, and if I execute it, here you could see, so we haven't used the group by clause. We have to use group by clause for device ID, comma we have to also keep max signal location as a group by clause, क्योंकि अगर हम लोग उसको group by clause में नहीं रखेंगे, it will not run. Okay, if you are taking any column for group by clause, we have to mention it in, if you are taking it in the result set, then we also have to mention it in the group by clause. If I execute it, here you could see that I am getting that data that 15 डिवाइस ID के लिए टोटल नंबर ऑफ लोकेशन, कितने नंबर ऑफ लोकेशन से सिग्नल आ रहा था, 2. मैक्सिमम सिग्नल कौन से लोकेशन से आया था, दैट इज पुणे, एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या है, दैट इज 8. So this is the output for. If you have some other solutions related to this particular query, please do post and comment it on my Instagram and YouTube channel. It is very important that you guys follow, share and subscribe my channel. That is how it motivates me and keep this particular good work. Or if you really think that I'm doing some good work, please do support. Okay, thank you so much.